बिला मुकाबला डिप्टी चेयरमैन सेनेट बन गए हैं। दोनों के मुकाबले में किसी उम्मीदवार ने कागजात जमा नहीं करवाए। दोनों की जीत का बाकायदा ऐलान 12:30 बजे होगा, जिसके बाद यूसुफ रजा गिलानी नए चेयरमैन सेनेट का हलफ उठाएंगे। हलफ उठाने के बाद चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी डिप्टी चेयरमैन सैदाल खान नासिर से हलफ लेंगे। हुकूमती अरकान की यूसुफ रजा गिलानी को चेयरमैन सेनेट और सैदाल खान नासिर को डिप्टी चेयरमैन मुंतखब होने पर मुबारकबाद। सेनेट का इजलास कुछ देर बाद दोबारा शुरू होगा। इस हवाले से मजीद का अपडेट्स है पार्लियामेंट हाउस के बाहर मौजूद अपने नुमाइंदे फरहाद खोखर से तफसीलात जानते हैं। जी फरहाद। जी बिल्कुल, बाला में आज होने वाले इंतखाबात में डिप्टी चेयरमैन और चेयरमैन सेनेट के लिए जो इंतखाब थे उसका नतीजा जो है वो आ चुका है। इत्तेहादी जमातों की जानिब से जो उम्मीदवार नामजद किए गए थे उसमें यूसुफ रजा गिलानी जिनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है और सैदाल खान नासिर जो है उनका ताल्लुक जो है वो नून लीग से था। दोनों इत्तेहादी जमातों के उम्मीदवार जो हैं वो इस वक्त जो है वो कामयाब हो चुके हैं। चेयरमैन सेनेट के लिए यूसुफ रजा गिलानी जो है वो चेयरमैन सेनेट मुंतखब हो चुके हैं, जबकि सैदाल खान नासिर जो हैं वो डिप्टी चेयरमैन के लिए मुंतखब हो चुके हैं। इनके मुकाबले में जो है वो अपोजिशन की जानिब से किसी भी उम्मीदवार ने जो है वो कागज़ नामजदगी जो है जमा नहीं करवाए, जिसके नतीजे में ये बिला मुकाबला दोनों उम्मीदवार जो हैं वो इस वक्त मुंतखब हो चुके हैं। 12:30 बजे के करीब चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी जो है वो हल्फ उठाएँगे। हल्फ उठाने के बाद जो चेयरमैन की सीट पर जब बैठने के बाद जो है वो डिप्टी चेयरमैन से हल्फ लेंगे और तमाम जितने भी अरकान ने सेनेट ने जो है वो मुबारकबाद दी है चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट को जो है वो उन्होंने मुबारकबाद दी है। हल्फ उठाने के बाद जो है वो 3 साल के लिए जो है चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन जो है वो मुंतखब हो जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया फरहाद खोखर, आपने इस हवाले से अपडेट किया। ओपोजिशन ने सेनेट को नामुकम्मल करार दे दिया। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब गैर कानूनी और गैर अखलाकी होगा। ऐसे गैर कानूनी इंतखाब का हिस्सा नहीं बन सकते। केपी के सेनेटर्स के बगैर चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब नहीं हो सकता। केपी असम्बली में इलेक्शन तक इजलास मुलतवी कर दिया जाए। पीटीआई के सेनेटर अली जफर का ऐवान में मुतालबा, कहा अगर ये इलेक्शन हुआ तो फेडरेशन को नुकसान होगा। सेनेट का ऐवान मुकम्मल है, आइन के खिलाफ कुछ नहीं हो रहा। हुकूमत का दो टोक मौक़िफ़, चंद अरकान के ना होने से सेनेट की कार्रवाई को रोका नहीं जा सकता। आइन में बहुत वाज़ेह लिखा है ऐवान की कार्रवाई जारी रहती है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का ओपोजिशन अरकान को जवाब, कहा केपी में मखसूस नशिस्तों पर हलफ नहीं लिया गया। वज़ीर आला केपी ने अदालती हुक्म को हवा में उड़ाया। सेनेट के 41 नौमुंतखब अरकान ने हलफ उठा लिया। पीपल्स पार्टी के 18, नून लीग के 14, JUI PTI अरकान ने हलफ उठा लिया। 3 आज़ाद अरकान और 6 ज़िमनी इलेक्शन में मुंतखब होने वाले सेनेटर्स शामिल हैं। MQM ANP नेशनल पार्टी के अरकान ने भी हलफ उठा लिया। इंतखाबात के बाद सेनेट में अरकान की तादाद 85 हो गई है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर इसहाक डार ने सेनेटर्स से हलफ लिया। PTI अरकान ने इजलास शुरू होते ही शोर शराबा और नारेबाजी शुरू। चेंज में ज़बरदस्त तेज़ी का सिलसिला जारी है। कारोबार के आगाज़ पर ही KSE इंडेक्स तारीख में पहली मरतबा 70,000 की बुलंद तरीन सतह अबूर कर गया। 100 इंडेक्स 650 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 70,270 पर ट्रेड कर रही है। मरकज़ में जो भी करेंगे वो सूबों की मुशावरत से करेंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू, कहा 14 अप्रैल से वाशिंगटन दौरे पर जा रहा हूँ। IMF प्रोग्राम के खिदोखाल पर बातचीत होगी। महंगाई बतदरीज कम हो रही है। जी, ये फेडरेशन का अलामत है, तो इंशाल्लाह इसमें बैठ के जो मैं हमेशा कहता हूँ अपने फाइनेंस के पोर्टफोलियो से भी कहता हूँ, जो भी हम फेडरेशन में करेंगे वो इंशाल्लाह सूबों की मुशावरत से करेंगे और ये बहुत अच्छा एक मौका है। 14 तारीख को इंशाल्लाह मैं वाशिंगटन जा रहा हूँ, तो वहीं ये IMF का जो प्रोग्राम है उसके खदोखाल हम इंशाल्लाह उनसे गुफ्तगू शुरू करेंगे और फिर वो मई में वापस आएंगे। उससे हमें जो एक्सटेंडेड फंड प्रोग्राम है उसमें इंशाल्लाह हम उसको आगे लेकर। अच्छा, महंगाई के वाले से कोई समझते हैं कोई रिलीफ मिलेगा आने वाले दिनों में? जी इंशाल्लाह, ये जो इन्फ्लेशन है ये बिजली चोरी में मुलव्वस नासिर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। एंटी करप्शन सर्कल इस्लामाबाद की बड़ी कार्रवाइयाँ। तर्जुमान के मुताबिक बिजली चोरी में मुलव्वस नासिर के खिलाफ 5 कामयाब छापे मारे गए। मुलजमान डायरेक्ट लाइन से कुंडा लगाकर बिजली चोरी कर रहे थे। मुलजमान के खिलाफ 5 मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं। मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए छापे भी मारे जा रहे हैं। अपडेट करें इस हवाले से, मजीद के तफसीलात हैं उस्मान राना बताएंगे। जी उस्मान।
जी बिल्कुल, बिजली चोरों में जो मुलव्विस अनासिर हैं उनके खिलाफ FIA ने क्रैकडाउन शुरू कर दिया है, जबकि एंटी करप्शन सर्कल जो है उन्होंने बड़ी कार्रवाई की है और 5 कामयाब छापामार कार्रवाइयाँ की गई हैं, जिसमें चकवाल के इलाके सदर में वाक़ 2 घरों में मीटर टेम्परिंग बिजली चोरी की जा रही थी, जबकि इस्लामाबाद के इलाके G10 और F11 में वाक़। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने अपडेट किया इस हवाले से। ऐवान बाला का इजलास जारी है, आपके बराह रास्त के लिए चलते हैं। Conduct of business in the Senate 2012. Now I request Senator Syed Yusuf Raza Gilani to come to the dais and make oath of office of the Chairman Senate under sub-rule 9 of Rule 9 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Senate 2012. Senator Yusuf Raza Gilani. सेनेट का इजलास दोबारा से शुरू हो चुका है और प्रिजाइडिंग ऑफिसर इसहाक डार सेनेटर हैं और उन्होंने बुलाया है यूसुफ रज़ा गिलानी को ताकि वो आके अपना हलफ लें, लेकिन जो तमाम तर अपोजिशन रहनुमा हैं उनकी जानिब से शोर शराबा किया जा रहा है, नारेबाजी की जा रही है और दूसरी जानिब जो हुकूमती अहदेदारान हैं, हुकूमती सेनेट के हिमायत याफ्ता हैं, वो वहाँ पर बैठ के यूसुफ रज़ा गिलानी के हक़ में नारेबाजी कर रहे हैं। अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर मनाज़र आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं, यूसुफ रज़ा गिलानी इस वक्त हलफ ले रहे हैं। Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. I, Sayyid Yusuf Raza Gilani, do solemnly swear solemnly swear that I will bear true faith and allegiance to Pakistan. That as chairman of the Senate and whenever I am called upon to act as president of Pakistan, I will discharge my duties and perform my functions honestly to the best of my ability, faithfully, in accordance with the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, the law, and as chairman of the Senate, in accordance with the rules of the Senate, and always in the interest of the sovereignty, integrity, solidarity, well-being, and prosperity of Pakistan. That I will strive to preserve the Islamic ideology, which is the basis for the creation of Pakistan. That I will not allow my personal interest to influence my official conduct or my official decisions. That I will preserve, protect, and defend the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. And that in all circumstances I will do right to all manner of people according to law, without fear or favor, affection or ill will. May Allah Almighty help and guide me. Ameen. मुबारक हो जी आप। यूसुफ रज़ा गिलानी ने चेयरमैन सेनेट के ओहदे का हलफ उठा लिया। आपको हम खबर से अपडेट कर रहे हैं।
यूसुफ रज़ा गिलानी ऐवान बाला के चेयरमैन बन चुके हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी ने अब तक कुछ देर पहले इसहाक डार जो कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर मंतखब किए गए थे, इस तमाम प्रोसेस के लिए उनसे हलफ लिया है और अब यूसुफ रज़ा गिलानी डिप्टी चेयरमैन सैदाल नासिर खान से हलफ लेंगे। ऐवान की सूरत हाल ये है कि अपोजिशन रहनुमाओं ने नारेबाजी की है और चोरी का सेनेट इलेक्शन की नारेबाजी भी की गई है। इस वक्त अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर आप मुलाजा कर सकते हैं तमाम तरह सूरत हाल है ये सेनेट की, जहाँ पर अब से कुछ देर पहले सेनेट के चेयरमैन ने हलफ लिया है और यूसुफ रज़ा गिलानी बिला मुकाबला चेयरमैन सेनेट मुंतखब हुए हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी जो है वो हुकूमती इत्तेहाद के नामजद करदा उम्मीदवार थे जो कि बिला मुकाबला चेयरमैन सेनेट मुंतखब हुए हैं। अब यूसुफ रज़ा गिलानी जो है वो अपनी सीट पर विराजमान हो चुके हैं। अब से कुछ देर बाद वो डिप्टी चेयरमैन सेनेट से भी हलफ लेंगे जो कि सैदाल नासिर खान नून लीग के उम्मीदवार हैं, वो मुंतखब हुए हैं बिला मुकाबला। इस वक्त यूसुफ रज़ा गिलानी से कुछ देर पहले जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर मुंतखब किए गए थे इलेक्शन कमीशन की जानिब से इसहाक डार सेनेटर, उन्होंने हलफ लिया है यूसुफ रज़ा गिलानी से। अब से कुछ देर पहले ये तमाम तरह सूरत हाल देखी गई और इलेक्शन के दौरान भी ये नारेबाजी की गई थी। अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर मनाजरा आप मुलाहिजा कर सकते हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी सीट पर विराजमान हो चुके हैं। Say Eid Mubarak to all the honorable senators. It is a unique honor and privilege to be elected as the chairman of this august house. I am thankful to Allah Almighty for having been given this opportunity. I am also grateful to my party, my leadership, the Pakistan People's Party, PPP, and allies, PML-N, and the leadership of PML-N, MQM, ANP, Balochistan Awami Party, BNP, PML-Q, NP, and the independents. And of course, JUI, who have reposed their trust in me. I will inshallah live up to their expectations. I congratulate all newly elected members of the Senate. This is indeed an honor, but it is also an enormous responsibility. The Senate represents the unity of the Federation. It represents the diversity and strength of this nation. It symbolizes equality. This is a particularly important time to be taking up this responsibility. It is important for historical reasons, and it is important for the challenges of the present. Almost exactly 54 years ago, in the month of April in 1970, Pakistan passed its federal parliamentary, democratic, and Islamic constitution. It was the constitution that gave birth to the Senate. Almost exactly 45 years ago, once again, in the month of April, that is 1979, the creator of this constitution, Qaid-e-Awam, Shaheed Zulfikar Ali Bhutto, was murdered. Last month, the Pakistan Supreme Court acknowledged the judicial murder and admitted this historical injustice. We have come a long way, but we have a long way to go. Shaheed Zulfikar Ali Bhutto, after winning the first election in Pakistan, held on the basis of adult franchise, widely regarded as the only free and fair elections in the country, also inherited a country that was broken. People were polarized. The morale of the institution was at the lowest ebb. The challenge was Herculean. Shaheed Zulfikar Ali Bhutto had a lead to process creating consensus, giving hope of giving voice to the voiceless, and formulating the constitution on the basis of equality, of citizenship, and the rule of law.
It was first time that the real attempt was made to empower the provinces and acknowledge and cherish each province's history, norms, culture, language, and ethnicity. It was first time that rights were granted to religious minorities, women, and the poor. The Constitution had not only healed a broken country, but to give a roadmap to thrive and flourish, to create consensus between people and different ethnicities, different ideologies, different worldview required leadership, democratic ethos, and tolerance. 50 years on the Constitution of 73, and this House remains the safeguard of our democracy and the Federation. This journey has encountered great turbulence and faced vicious attacks by those who don't wish to see Pakistan flourishing as a modern, progressive, and inclusive democracy. Our democratic journey is a cause for celebration, but it is also a moment for us to reflect, introspect on our constitutional journey of the past 5 decades, the challenges of today, and most importantly, where we want to go in the future. In the present moment, the crisis is deep. Pakistan faces an assault of those who seek to divide and polarize us, those who seek to incite hatred, those who seek to replace norms of civility and abuse democracy and demagoguery. On the many crises we confront, the most and dangerous is the attempt to sow hatred amongst toxic polarization, incitement of violence, demagoguery designed to distract from the real work that needs to be done by us together and done by you, the members of this, being the front lines in leadership roles, representing the will and aspiration of the people and of the destiny of the country. The PPP has always rejected the politics of hate and preferred politics of reconciliation and of the welfare of the people. I have had the privilege and honor to hold the highest offices of Prime Minister and the Speaker of the National Assembly in past. But by the grace of Allah, I have always been loyal to my politics, my convictions, and my leadership, I have been fortunate to have been blessed with strength to discharge my official functions without fear or favor. I will be the chairman of the Senate of the entire House. And my ambition is to build bridges, enable dialogue, and provide a space which allows for meaningful, robust discussion and disagreements within the norms of parliamentary conventions, and most importantly, for the progress of the country. When I became Prime Minister, it was time of great fear, apprehension, with systemic dismantling of democratic institutions, a global economic recession, and divided country. By the grace of Allah, the leadership of my party, and strength of my conviction, we steadied the ship. Inshallah, we will succeed in returning Senate to its real glory as a powerful legislative house of the Federation. I have a 4 decades long political career, and by the grace of Allah, I have held my head high regardless of whether I am in the Prime Minister House or in the prison.